Hello, literature lovers. Welcome to LittWit Club. Hope you all are doing great. And today we will continue our lecture on multi-grade topic, in which we are completing each and every topic with the help of MCQs. हम 30 MCQs के हेल्प से टॉपिक को पोएम को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा हमारे चैनल पे LT ग्रेड का प्रैक्टिस सेट भी लाइव है. आप उसको भी जाके कर सकते हो, जिसमें हम 150 to 120 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं पूरे सिलेबस से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So the very first question is, who is the writer of the poem "O Captain, My Captain"? Whether it is Emily Dickinson, Walt Whitman, Edgar Allan Poe, or Robert Frost. So it is written by Walt Whitman. The poem "O Captain, My Captain" is an elegy on the death of George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, or Franklin D. Roosevelt. So it is a elegy on the death of Abraham Lincoln. The poem was written in response to which historical event? So the end of American Revolution, or the assassination of Abraham Lincoln, the singing of the Declaration of Independence, or end of the Civil War. So it is written in the response of the assassination of Abraham Lincoln. उनको उनकी हत्या कर दी गई थी, उसी के रिस्पॉन्स में ये एलिजी वॉल्ट विटमैन ने लिखा है. The poem was first published in 1855, 1865, 1871, or 1881. So it is written in 1865, उनके डेथ के बाद. In which collection of Walt Whitman's poetry did "O Captain, My Captain" first appear? Leaves of Grass, Drum Taps, Memories of President Lincoln, or Crossing Brooklyn Ferry? So it is published in the collection Memories of President Lincoln. The poem belongs to which poetic genre? Whether it is lyric, pastoral poem, or elegy, or ode. So it is an elegy. The poem uses an extended metaphor, comparing Lincoln to a soldier, a captain of a ship, a bird, or a father. सो ओ कैप्टन माय कैप्टन बेसिकली अब्राहम लिंकन को एक शिप के कैप्टन से कंपेयर किया जाता है, और ये जो शिप है वो शिप अमेरिका से कंपेयर किया गया है. सो हियर इट इज कैप्टन ऑफ अ शिप. हाँ, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि द शिप इन द पोएम सिंबलाइजेस द पोएट्स हार्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिकन पार्टी, और द नेवी. सो इट इज फॉर द यूएसए और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. The fearful trip refers to Lincoln's political journey, the Civil War, the assassination attempt, or the voyage to victory. So it is to Civil War. जो अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था, उसके फियर उसी को एक फियरफुल ट्रिप के तौर पे, कि वहां पे जो भी रंग भेद चल रहा था ब्लैक और व्हाइट के बीच में, उसको एंड करने के पीछे जो एक सिविल वॉर चल रही थी अमेरिका में, उसको काफी हद तक कंट्रोल करने का काम लिंकन ने किया था. बट लास्ट में उनको किसी ने गोली मार दी. तो दैट इज व्हाट अ फियरफुल ट्रिप इज ऑल अबाउट. द पोएम हैज हाउ मेनी स्टेंजास? Whether there is two stanzas, three, four, or six stanzas. So there is three stanzas. Each stanza of "O Captain, My Captain" contains how many lines? So whether there is 4 lines, 6 lines, 8 lines, or 10 lines. So there is 8 lines in each stanzas. What is the rhyme scheme of the poem? So the rhyme scheme of the poem is A B B C D E D. The poem differs from Whitman's usual free verse style because it is written in a blank verse, strictly rhymed and metered prose poetry or haiku form. So it is strictly rhymed and metered. The ship was withered every wreck means the ship has sunk, the nation has survived every hardship, the sailors are dead, or the ship is still in danger. So उस नेशन ने हर एक तरीके के हार्डशिप को कह लो कि सरवाइव किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The port is near, the bells I hear symbolizes the end of the war and the celebration of peace, a call to battle, the death knell of soldiers, the ship's departure. So, the end of the war and the celebration of peace. Next question is the captain lies on the deck. What it means? Sleeping peacefully, wounded and dead, giving orders, or celebrating victory. So, captain is wounded and dead. What emotion dominates the poem? Whether it is anger, joy, grief mixed with pride, or confusion. So it is grief mixed with pride. एक तरफ तो grief है कि उनका जो कैप्टन है वो मर गया, लेकिन उसके मरने से पहले उसने उस शिप को किनारे पे ले आया, मतलब कि भले लिंकन की डेथ हो गई, लेकिन लिंकन ने जो अमेरिका है उसको सिविल वॉर से बाहर निकालने का काम किया, एक पीस लाने का काम किया, एक स्टेबिलिटी लाने का काम किया पूरे यूएसए में. सो दैट इज द प्राइड. So the phrase "oh heart, heart" is an example of alliteration, repetition and apostrophe, metaphor और irony. So यहाँ पे वो एड्रेस भी कर रहे हैं अपने हार्ट को, और उसके साथ साथ यहाँ पे रिपीटिशन भी है. So that is repetition and apostrophe. Next question is rise up and hear the bells is addressed to the sailors, the Captain Lincoln, the people of America, or the poet himself. So it is to the captain Lincoln कि आप उठ के देखिए, आपकी जो नाव है, आपकी जो शिप है, वो किनारे पे आ चुकी है. That is. Next है the flag and the bells in the poem symbolize morning only, national pride and victory, nature's sound, military discipline. So it symbolizes national pride and victory. So the next question is what literary device is used in fallen, cold and dead? So whether it is simile, extended metaphor, irony or hyperbole. So here वही एक जो continuous metaphor कैप्टन के तौर पे यूज हो रहा है अब्राहम लिंकन के लिए, वही चीज है. तो ये एक्सटेंडेड मेटाफोर होगा यहाँ पे. द रिपीटिशन ऑफ द फ्रेज fallen cold and dead emphasizes the poet's disbelief and grief, celebration, hope and rebirth, irony. So जो पोएट है वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उसके कैप्टन की मीन्स अब्राहम लिंकन की डेथ हो चुकी है और वो ग्रीफ में है. सो दैट इज हियर. Which of the following themes does the poem not address? Death and mourning, national pride, romantic love, leadership and sacrifice. So यहाँ पे romantic love की बात कही नहीं है, death और mourning है, national pride है, leadership और sacrifice है. ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं. Oh, the bleeding drops of red symbolize blood and sacrifice of Lincoln, flowers on the deck, flags color tears of joy. So it is blood and sacrifice of Lincoln. ठीक है कि उनके ब्लड जो निकल रहे हैं वो उनके सेक्रीफाइस और की बात कर रहे हैं. दैट इज फॉर यू buckets and ribboned wreaths suggest celebration of victory, funeral honors for the dead leader, wedding decoration offering to gods. So it is funeral honors for the dead leader, that is Abraham Lincoln. The mood of the stranger is hopeful, joyous, yet uneasy, indifferent, completely sorrowful. So it is completely sorrowful. The mood of the final stranger is optimistic, solemn and mournful, joyful, heroic and proud. So it is very solemn, serious, and also mournful. Which poetic technique dominates the poem? Extended metaphor and imagery, satire, paradox, personification of nature. So here it is extended metaphor and imagery. Which phrase best describes the poem overall tone? Irony and sarcasm, triumph and grief, pity and fear, anger and defiance. So it is triumph and grief. एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका जीत रहा है, अमेरिका पीस में आ रहा है, सिविल वॉर खत्म हो रहा है. दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उनका जो लीडर है उसकी डेथ हो चुकी है, दैट इज ग्रीफ.
What does the poem ultimately express? The futility of war, the cost of freedom, and the pain of losing a great leader, the poet's personal failure, or the joy of revolution. So it is the cost of freedom and the pain of losing a great leader. Thanks for watching. मिलते हैं next video में.